Hi everybody, welcome back. Uh, Hopefully, we'll try and finish our discussion on evolution today. Right? We did a summary also last time as to what are the topics that we discussed in evolution. In the previous video, we also went through the NCRT to see the topics discussed. And in the last session, we discussed at length what is Hardy-Weinberg's equilibrium, right? And in the doubt-solving discussion, we saw a couple of problems also as to how the numerical problems are to be solved for Hardy-Weinberg's. I'll try and give you all a few more problems on the same topic. Right now, the last part of our discussion, right, is the progress of evolution, how evolution has progressed through time, and finally, we will end the discussion on in this entire progress of evolution, how has evolution of man been achieved, right? So, if you see the slide here is showing us what is a geological time scale. I said how evolution has progressed through time. So first we need to understand how has time been divided. So we call it as a geological time scale, right? So the total lifespan, I'll just change my pointer. Yes, the total lifespan on Earth from the time of its origin is called as a geological time, right? Now, the geological time, the first division is called as the era, right? So here we have the various eras, right now. So we start with the Azoic era, right, wherein there is no life existing, right? In your notes also there is one table where this entire eras have been mentioned, followed by Archaeozoic, Proterozoic era, Paleozoic era, Mesozoic and Cenozoic era. Right? Now, this is the major division. The eras are further divided into periods, and the periods are divided into the epoch. Right? So, first let us see what are the eras, and within the eras, what are the epoch, and periods, and within the periods, what are the epoch, right? A lot of questions based on this data is asked in the exam. Okay, I can see three major eras wherein life has existed. I have highlighted here. If you look at this, Azoic, Archaeozoic, Proterozoic, right? Now, Archaeozoic में very minimal life was present. प्रोटेरो में देयर इज वन ओनली प्री कैम्ब्रियन एरा, और जो पेलियोजोइक है यहाँ पे आप देखो पेलियो से यू विल हैव द कैम्ब्रियन पीरियड स्टार्टिंग, ये सेकेंड कॉलम जो है वो पीरियड का है. सो इन द पेलियोजोइक यू हैव द कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, which is further divided into the Mississippian and Pennsylvanian, and finally Permian. उसके बाद आता है मीसोजोइक एरा, right? Mesozoic era is divided into three periods: the Triassic, the Jurassic, the Cretaceous. I hope the word Jurassic does ring a bell properly, right? This was the period during which the dinosaurs were dominant, right? So Triassic period में dinosaurs started evolving, right? Jurassic में you had the peak where dinosaurs were existing, एंड क्रिटेशियस के बाद जैसे ही टर्शरी की तरफ आए यहां पर ये एक्सटिंक्ट हो गए. दैट्स व्हाई दिस एरा is called as the era of reptiles. Right now the larger size reptiles were dominant on this earth, right? Okay, Cretaceous के बाद आता है तुम्हारा Cenozoic era, which is further divided into the tertiary period and the quaternary period. Now herein we have the period being divided into the epoch. The tertiary being divided into the Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene. The quaternary period being divided into the Pleistocene. This was where man started developing. Modern man ka appearance came in Pleistocene. We'll see that.
and we are now currently in the Holocene epoch, right? So this is how time from its point of origin, right, from the start of this earth has been divided, right? So we call it as the geological time scale. The names in this geological time scale are very important, especially the Mesozoic and the Cenozoic, right? A lot of questions pertaining these are asked, right? Now taking the discussion ahead, ये देखो ये थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया है, राइट? कैन यू सी दिस प्री कैम्ब्रियन? नाउ व्हाट इज दिस प्री कैम्ब्रियन? दिस इज कैम्ब्रियन के पहले का पीरियड, राइट? सो प्लीज, हाँ, एरा, पीरियड, इपोक, राइट? You should be knowing, okay, you have to recognize that if you are given a particular term, so maybe you'll have to tell what is this is an era or a period or an epoch. ठीक है? सो ये प्री कैम्ब्रियन है. नाउ यू कैन जस्ट ट्रेस दिस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैम्ब्रियन दिखेगा. इफ यू वांट आई कैन जस्ट जूम इन फॉर यू. ये देखो कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन है, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, ये दोनों मिला के कार्बोनिफेरस है. इसका डिवीजन मैंने बताया, राइट? पर्मियन. अब यहां पे आपका पेलियोजोइक एरा खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है मीसोजोइक. ये देखो यहां पर रेप्टाइल्स जो है वो ओरिजिनेट कर रहे हैं. ये देखो ट्रायसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड, वी हैव डोमिनेंस ऑफ रेप्टाइल्स, एंड ये क्रिटेशियस पीरियड है, राइट ना? ये क्रिटेशियस पीरियड यहां पर, ये देखो ये एरो, कैन यू सी मीसोजोइक एरा इज एंडिंग हियर and your Cenozoic era is starting here. Can you see this line which is made, written as 65 million years ago? If you read the NCERT, you will find this 65 million years ago mentioned in that paragraph, right? अच्छा, one small point here. ये देखो यहां पर क्रिटेशियस पीरियड खत्म होते होते we saw that dinosaurs were coming to an extinct, right? And tertiary के वक्त जो है वो ये सारे खत्म हो गए. In one of the questions they have asked, they have given a reference of a term called as KT junction. Now KT junction sometimes can be a very confusing term, कहीं मिलेगा नहीं, right? तो ये जो क्रिटेशियस है ना, उसको उन्होंने K डाला है, और ये जो टर्शरी है उसको T डाला है. तो ये जो जंक्शन है जहां पर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, दैट इज कॉल्ड एज केटी जंक्शन, राइट? एक आई थिंक अरियंत और एमटीजी, आई डोंट रिमेंबर, बट एक क्वेश्चन में ये केटी जंक्शन आया हुआ है. सो फॉर योर रेफरेंस आई हैव मेड दिस मेंशन. सो टर्शरी के बाद ये देखो ना, यहां पे कैन यू सी द इपोक्स ना, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, और यहां रहा प्लीस्टोसीन. कैन यू सी इमर्जेंस ऑफ अर्ली मैन, मॉडर्न मैन, and this is the Holocene epoch, right? Now so this is how sorry, the various timelines have been arranged. Now this is the geological time scale and its corresponding development, right? अब इसका जो है मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा तुम लोग को, and if possible I'll send you the PDF of this particular document also, so that you don't waste time copying this, right? Now very quickly, if I can go through this, can you see this Azoic? Azoic में there is no life, only chemical evolution, जो हमने starting में पढ़ा. Archaeozoic में era of invisible life, only prokaryotes. Protero में यहां पर जहां तुम्हारा प्री-कैम्ब्रियन, right ना? So protozoa, sponges, coelentrates, annelids and mollusks. कैम्ब्रियन में, right, आर्थ्रोपोडा से आगे डेवलपमेंट हुआ. See, in the respective periods we kept in the bracket, right ना, कि कौन सा dominant development था वहां पर. If you see, Devonian is golden age of fishes, लेकिन यहाँ पे Silurian में देखो हम, jawless fishes were dominant. I hope you remember what are jawless fishes, cyclostoma, right? Jawless, okay, were dominant and origin of true fishes. So yeah, Silurian में उसका origin हुआ, और Devonian में they became dominant. लेकिन जैसे ये dominant हुआ, वहां पे origin of amphibians भी था. So Carboniferous was golden age of amphibians because they were dominant, और यहाँ पर origin of reptiles हुआ. And the reptiles then in the Triassic and Jurassic became dominant in the form of dinosaurs, right? So as you go up, you will realize, and you will also be able to appreciate what kind of
corresponding development is given in this particular chart, right? So very important document, please preserve. If possible, you can take a printout and just put it inside your notes also, please. ठीक है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ये गोल्डन एज वाला है ना. सो यू मे बी गिवन डैश और व्हाट इज द गोल्डन एज ऑफ फिशेस और व्हाट इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस और डायनासोर्स और रेप्टाइल्स एक्सेट्रा. ओके, these are diagrams, these are some images which I got for you to show the corresponding development. या भी डिवाइड कर दिया कि एनिमल किंगडम में क्या डेवलपमेंट हुआ है और प्लांट किंगडम में क्या डेवलपमेंट हुआ है. इफ यू कैन सी प्रॉपरली ना, एक काम करता हूँ, जस्ट अ मिनट. Right now, I'll just make myself a little invisible here, right now. So now you can see this properly. ठीक है? So appearance of देखो यहाँ प्लांट का पूरा डेवलपमेंट दिया है यहाँ पर. So जो important प्लांट्स है जैसे जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, उसका करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, वो प्लीज उसको नोट कर लेना, राइट ना. जैसे फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स है, कॉनिफर्स है, साइकैड्स है, ये ऑल जिम्नोस्पर्म्स के टाइप्स ही है, राइट ना. ओके, this is from the NCERT again, same type of a diagram. So corresponding whatever are the periods and the eras, उसके corresponding plant developments है. Now evolution of man, right? So this was how evolution progressed, right, from Azoic, right now से लेके Cenozoic तक, right, till present time. Now इसके अंदर how development of man has occurred, right? What is the development of man? Now, अब अपना डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर एनिमल डेवलपमेंट, अपना किंगडम एनिमेलिया जो है ना, वो हम लोग ने स्टॉप किया था जहां पर क्लास मेमेलिया था. ओके, सॉरी आई हैड पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम. सो एवोल्यूशन ऑफ मैन ना, उसमें अपना डिस्कशन जो एनिमेलिया में रुका हुआ था वो क्लास मेमेलिया पे था, राइट. इनफैक्ट वी हैड डन ऑर्डर प्राइमेटा आल्सो, राइट. वहां से वी हैड शिफ्टेड टू थीरिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, इफ यू रिमेंबर. ऑर्डर प्राइमेट्स में सब ऑर्डर, देयर आर टू सब ऑर्डर्स, प्रोसेमाई एंड एंथ्रोपॉइड्स. Prosemae में you have lemurs, lorizers and tarsiers. If you can see this, these are lemurs and tarsiers, right ना. ये एकदम early stage of evolution में है. Suborder anthropoids में you have the new world monkeys, old world monkeys and apes and man. ये रहा. Suborder anthropoids में you have new world monkeys, old world monkeys and hominoids, right ना, hominidae. एप्स एंड मैन जिसमें आता है. सो यहां पर एप्स और मैन आता है. होमोनिडा जो है वो इसके नीचे फैमिली होमोनिडे आएगा. क्लासिफिकेशन देख लो आप यहां पे, राइट ना. एप्स और मैन, होमोनिडे आ गया. एंसेस्टर्स ऑफ एप्स एंड मैन started evolving probably in Miocene. Again, Miocene is a epoch, right, in separate lines. Like Hylobatids में gibbons, Pongids में gorilla, chimpanzee, orangutan, and Hominidae में you have apes and man. अब ये जो sentence है ना, started probably evolving in Miocene. Just got one small image for you. ये देखो, right? I think यहाँ पर I can come back. ये देखो, लुक एट दिस लाइन. अब इफ यू सी, ये पूरा सीनोजोइक एरा है, पूरा सीनोजोइक, मॉडर्न एरा. टर्शरी एंड क्वार्टनरी. टर्शरी के अंदर पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, राइट. वी सेड एवोल्यूशन ऑफ मैन, राइट. क्या लिखा था वहां पे पीछे देखो,
started probably evolving in Miocene in separate lines. Look at Miocene. अब ये देखो लेम्यूर्स एंड टार्सियस यहाँ पे. उसके बाद द एनिमल इज पैरापिथिकस. पैरापिथिकस से यू हैव द न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड वर्ल्ड, राइट ना. सो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, आई एम सॉरी, ये देखो, ये न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड, दैट इज पैरापिथिकस से निकलने वाले लाइंस. और एक एनिमल जो निकलता है वो ड्रायोपिथिकस. नाउ लुक एट ड्रायोपिथिकस फ्रेंड्स. ड्रायोपिथिकस आपको दिख रहा है मायोसीन में. यहां से कैन यू सी डिफरेंट लाइंस इवॉल्विंग. वन लाइन एवोल्यूशन गोज टू अ गिबन, राइट. गिबन कहां गया, राइट, राइट ना. गिबन आ गया तुम्हारा होमोनिड्स में आ गया, राइट. सो गिबन्स, ओरंगुटन्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास. गिबन्स, ओरंगुटन्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, राइट ना. ये देखो ये पूरा लाइन जो है ड्रायोथिकस आता है. एंड वन ऑफ द bifurcations, one of the diversification goes to Ramapithecus, Ramapithecus to Australopithecus, and the line goes to man, right. तो ये सब का जो evolution है, ये पूरा जो है गिबन से लेके ये पूरा होमोनिडे है, ये पूरा होमोनिड्स में है. अब ये जो है कहां से शुरू होता है, मायोसीन में, right. That's why this started evolving probably in Miocene in separate lines. Hylobatids, spongids and hominids. Hominids में आता है, see we have to go towards man. That's why we are narrowing down the classification. Apes and man. ठीक है ना. So अब इसमें आ गया apes and man. Right. In your notes there is a small description on the ape and man. I have brought this discussion here. But in the NCERT there is no such discussion on ape and man. And there are no questions also asked based on apes and man. So as a reference you can have this, the discussion between ape and man. If you want, I'll discuss this in 5 minutes flat. Apes have a prognathous face, right now. They have prognathous. Prognathous यानी जो आगे आता है. Can you see the jawline आगे आ रहा है, right. On the other hand, man has a orthognathous. उसका jaw जो है straight है, right. So prognathous, orthognathous. Slanting forehead, snout is protruded. This is the nose is a little upwards, protruded. Flat nose, teeth are large. A simian gap is present in the upper jaw, right ना. उसके जो lower canines थे ना, वो बहुत बड़े थे. तो when you close the mouth, you need a space in the upper jaw जहाँ पे वो canine fit हो जाएगा जाके. तो वो जो gap था canine को fit होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं simian gap, right. Chin absent, eyebrow ridges heavy, protruded. Foramen magnum in the skull is directed backward. ये देखो, if this is understood properly. अब foramen magnum हमारा नीचे है, base of the skull में, इसका back, इसलिए इसका जो posture था वो semi erect था, right ना, drooping posture था. ठीक है. Coupled with that, उसके forelimbs were longer than hind limbs. That was the forelimbs were touching the ground. So these use all the forelimbs to walk, right. Now they are called as knuckle walkers, right, because their forelimbs are longer and they touch the ground. Whereas apne mein the forelimbs are shorter, the hind limbs are more longer. Lumbar curve is absent, pelvic girdle is narrow and elongated, and semi-erect hai, quadrupedal. They use all the four, as I told you. Cranial capacity is around 400 to 600 cc. Right. Now if you look at the dental arch of the ape, right, and look at the dental arch of man, right. अब ये जो है वो बराबर rounded parabola है, and this is not, right. So even from the structure you can differentiate between the ape and man, right. वही यहाँ पर dental arch is rounded parabola है. Foramen magnum in the skull directed downward. So ape में it is directed backward, here it is directed downwards. Now because of that the vertebral column becomes straight and you have a erect posture. Immediately the hands are up, the forelimbs become short, and the forelimbs may you have more designed for work, and the lower limbs, the hind limbs are more for locomotion. But here few important differences that cranial capacity बढ़ गया अभी 1450 cc, यहाँ पर it was only 400 to 600 cc, and the most important thing is development of articulated speech.
स्पीच वहां पर भी है, but that speech is not understood. Right now, it's more of gurgling of sound in case of an ape. But here it is articulated speech. That means what you speak is understood by people. That's called as articulated speech. So these are a few differences between development of ape and man. Uh, Now, as far as development of man is concerned, we have tried to divide this into four stages, and I'm trying to fit each of the sub stages into that. So first you have the ape stage. वो Dryopithecus जो है ना वो ape stage में आता है, एकदम starting Miocene वाला. Okay. Ape man stage में, right now, so slowly progress to ape man stage. उसमें Ramapithecus, Keniapithecus, Australopithecus. Right? Australopithecus was the connecting limb between ape man and primitive man. So Australopithecus, you know what's a connecting link? It will have features of both ape also and man also. I'll show you some differences also. एप मैन के बाद में आता है प्रिमिटिव मैन. जहां से प्रिमिटिव मैन आया वहां पे हमारा जो प्री वर्ड है वो होमो हो जाएगा, राइट? होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, राइट? हैंडीमैन बिकॉज ही यहाँ पे यूज ऑफ टूल्स बहुत ज्यादा था, इसलिए इसका निक नेम वाज हैंडीमैन. होमो इरेक्टस में वी हैव टू वेरिएंट्स, द जावा मैन एंड द पेकिंग मैन. Then the Neanderthals, right? As a Neanderthal, generally the names have been referred to from where the fossils have been located, right? Now, ये जो Neanderthal Valley is there in Germany, वहां से located था. Peking, you know, is in China. Java is in Indonesia. And modern man में you have Cro-Magnon and Homo sapiens. So that is how, yeah. If you want, you can make a note of this, stage wise, right? Now, I'll just तो इसको पूरा स्टेज वाइज आप लिख सकते हो. नोट्स में और एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है. इफ यू सी इन द नोट्स ना, यू विल हैव ईच ऑफ दीज स्टेजेस डिस्क्राइब, राइट ना. प्रोप्लायोथिकस, ड्रायोपिथिकस, रनापिथिकस, राइट ना. मैंने शॉर्ट में डाला है, एकदम पॉइंट्स डाले हैं इसमें. ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देखो मैंने बताया था मैन विथ एप ब्रेन, ये एप मैन वाले भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैन वाले भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, राइट ना. सो यहां पर उसका डिफरेंस दिया हुआ है. होमो हैबिलिस, जैसे मैंने बताया था, हैंडी मैन, ओके. और होमो इरेक्टस में वी हैव टू वेरिएंट्स, जावा मैन एंड पेकिंग मैन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डाले मैंने. और निएंडरथैलेंसिस, क्रो-मैग्नन, राइट. देखो निएंडरथल में इट इज फाउंड इन निएंडरथल वैली. क्रेनियल कैपेसिटीज, यहां पे बरियल सेरेमनीज ऑफ डेड. सो यहां पर पता चला सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई. इट इंडिकेट्स दैट बरियल सेरेमनीज फॉर द डेड. क्रो-मैग्नन में अगेन क्रेनियल कैपेसिटी तो उतना ही है, बट द स्कल बिकम्स अ लिटिल लार्जर. लिव्ड इन केव्स विद फैमिलीज, राइट. तो हंटिंग एंड पेंटिंग आ गया, यूज ऑफ टूल्स, वेपन्स, आइवरी ऑर्नामेंट्स का यूज आ गया, use hides of animals, and again burial customs were also present. And finally the last stage was modern man, right? Modern man, cranial capacity is 1450, but with a much evolved brain, more gyri sulci, speech is articulate, right now. Science technology development obviously is there, right now. So this is how over a period of time we have seen development of man, right? तो ये अपना एकदम लास्ट वाला पार्ट है, राइट, विच रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग. फाइन. नाउ ये जो करस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी में है, राइट ना, आई जस्ट ट्राई दैट एनसीईआरटी आल्सो कम्स टू द फोर ईयर. एनसीईआरटी देखो, गुड. ओके, देखो यहां से 7.8 से डिस्कशन स्टार्ट होता है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. Right, 2000 million years ago the first cellular forms of life, ये सब अब ये स्टार्ट हो गया, पूरा केमिकल एवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ, राइट. जो केमिकल एवोल्यूशन खत्म हो गया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्टेड. देन यू विल फाइंड single celled organism became multi cellular life forms 500 million years ago. MYA is million years ago. Invertebrates were formed and active. उसको आप correspond कर सकते हो with the chart that I am going to provide you. But अगर कहीं भी conflict है तो NCERT का dates and NCERT का figures will be final, right?
Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. We had seen Cyclostomata, वो पेज पे भी देखा था हम लोग ने, right? I think Devonian या Silurian, उसके पहले में. Seaweeds and few plants existed around 320 million years ago, right? तो ये जितने भी million years ago में लिया है तो corresponding उसका एक timeline बना लो आप लोग, right? Now make a timeline. And this timeline will help you to remember this entire thing. Uh, Again, this diagram is also important. It has to be learned as it is. I'll just help you with this diagram. थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं. Can you visible? Right now? Okay. So ये early reptiles ये देखो side में you have the various periods: Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, and Tertiary, Quaternary. Right now, sometimes this entire diagram is given and these A, B, C, D यहाँ पे लिखा रहेगा, तो you just have to mention which periods are they. So figures, as I have always maintained that they have to be studied like text. Right. So if you see यहाँ पे early reptiles, they have shown those have become extinct. They developed to sauropsids and synapsids. अब sauropsids वाली लाइन turtles में जा रही है, देखो. Right. ये देखो sauropsids वाली लाइन यहाँ पर जा रही है. Synapsids वाली लाइन, सिर्फ synapsids वाली लाइन, Pelycosaurs, Therapsids और जा रही है mammals की तरफ. यानी बाकी पूरे जितने भी ऊपर एनिमल्स मेंशन किए हुए हैं ये सब के सब सौरोप्सिड से डेवलप होते हैं. दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न एंड विद द करस्पॉन्डिंग इयर्स मिलियन इयर्स अगो मेंशन्ड हियर प्लीज. ठीक है. सो यू कैन जस्ट चेक द टाइमलाइन, यू मेक द टाइमलाइन एंड यू विल गेट दैट अकॉर्डिंगली. अगेन वही आई टोल्ड यू 65 मिलियन इयर्स अगो डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड. अपना केटी जंक्शन वाला पॉइंट आया था diagram I showed you 65 million years ago, right? First mammals were like shrews, the point that we discussed, right? Na? Lemurs, tarsiers, they were shrew-like animals. Fossils are small-sized. Mammals were viviparous, right? Na? अब ये पूरा जो है वो continental drift का description दिया हुआ है. It's very simple, right? Na? And last में you have origin and evolution of man. Now, origin evolution में again you will have to make a proper timeline. 15 million years ago, primates called as Dryopithecus and Ramapithecus. अब ये जा रहे हैं Miocene की तरफ. Dryopithecus and Ramapithecus were existing. अब उनके थोड़े characteristics दिए रहेंगे. Ramapithecus was more man-like, Dryopithecus was more ape-like. The distinction which we have made in the chart. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania, right? They revealed hominid features leading to belief that man-like primate walked in Eastern Africa. 2 million years ago, Australopithecines, right now Australopithecus, probably lived in Eastern African grasslands. Again, characteristics are mentioned, right? Homo habilis, handyman. Brain capacities were between 650 800. Right now, figures, numbers always to be taken from the NCERT, please. Probably did not need fossils discovered in Java. अब ये Homo habilis से Homo erectus, I told you दो variants थे, Java and Peking. Revealed the next stage, Homo erectus. Right now, so Homo erectus के दो variations थे. Homo erectus had a large brain around 900 cc. Homo erectus probably ate meat. The Neanderthal, अब next level आ गया, Neanderthal man, brain size of 1400 cc. Please हर एक जो stage है उसका corresponding cranial capacity important है. Sometimes match the column में भी पूछते हैं लोग, the stage and the corresponding cranial capacity. Right? Used to bury the dead. फिर आ गया Homo sapiens. Right ना? Homo sapiens में पहले Cro-Magnon आएगा और उसके बाद जो है वो modern man आएगा. Right? So during ice age between 75,000 ये Pleistocene में आएगा, right? Pleistocene अगर टेबल में चेक करेंगे तो वहाँ पे ice age लिखा हुआ है, right? That is when the modern Homo sapiens arose और फिर आगे उसका description खत्म होता है, right? So this is how the entire last last part का study has to be done. Right now, any query or any question which arises, you can please message me, right? Right. So that guys finishes our
discussion on evolution, right? अब बचता है अपना frog and earthworm, right? I'll send across the PDFs of frog and earthworm, जो मेरी slides है उसका PDF बना के भेजता हूँ, and then we will discuss others we require. I think one lecture should be sufficient for discussing both frog and earthworm, right? Now, fine. Thanks a lot. Thanks very much.